Stand by for the time mark. Mark minus 30 minutes and counting. AIT spacecraft event 417 completed. RNMS confirms Roger. range real-time network readiness for PSLV C52 EOS-04 mission launch. CDP Roger. Met to ROD and Mission Director. Mirror weather conditions are prevailing for PSLV C52 launch. ROD Roger. Mission Director Roger. Sigma to control events 420. TCDC SHAR 1 and 2 observed. Both telemetric carriers are on. Noted. नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का मैं विकास स्वर्णकार इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसरो के प्रमोशन मिशन PSLV C52 EOS-04 मिशन के सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 EOS-04 का प्रमोशन किया जा रहा है। यह भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 5:59 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जा रहा है। MC2 CDP and control real time programs. इस वर्ष 2022 का यह प्रथम प्रमोशन है। Good morning and hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri, welcoming you to the launch event of PSLV C52 EOS-04 mission being telecast live on DD National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. The launch will take place today, the 14th of February 2022 at 5:59 hours Indian Standard Time from the first launch pad. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. MCC to control event number 431 completed. भारत के Minus 27 minutes. भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट PSLV C52 की यह 54वीं उड़ान है। PSLV की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में नित भार ले जाने की क्षमता करीब 1750 kg की होती है। PSLV ने अनेक उपग्रहों, विशेषकर IRS श्रृंखला के उपग्रहों का निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजकर वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का नाम भी जीता है। यह तृतीय पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है। इसके पहले SLV और ASLV नामक प्रमोचक रॉकेट हुए हैं तथा इसके बाद GSLV Mark 2 तथा Mark 3 ने भी अपनी विश्वसनीयता सिद्ध कर दी है। इसरो आज फिर तैयार है एक और प्रमोशन मिशन PSLV C52 EOS-04 के लिए। वैसे तो पूरा भारत कोरोना की महामारी 2020 से झेल ही रहा है। इसरो के वैज्ञानिक भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन इस समय भी अच्छे प्रबंधन तथा वैक्सीनेशन की मदद से अपने कार्य प्रगति पर कोई भी अंतर आने नहीं दिया है। PSLV C52 प्रमोशन यान का समाकलन जनवरी 19, 2022 को शुरू हो चुका था। आज 14 फरवरी 2022 को पूर्ण परीक्षित हो प्रथम प्रमोशन मंच पर यह प्रमोचित होने के लिए पूर्णतः तैयार है। You're right, Vikas. A new normal is in prevalence in SDSC SHAR and other centers of ISRO post-pandemic. The PSLV C52 will launch EOS-04 satellite weighing 1,713 kilograms
at an altitude of 529 kilometers sun synchronous orbit Minus with a 25 semi-major minutes. axis of 6,900 kilometers with 97.5 degrees inclination. It also carries two satellites as co-passengers. The PSLV C52 being launched today is the PSLV XL version of the reliable and versatile PSLV. It has 6 strap-ons along with the core motor. प्रमोशन की उल्टी गिनती करीब 25 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। इस दौरान सभी गतिविधियां जैसे कि यान को पावर ऑन करना, सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणाली की स्वास्थ्य जांच करना, तरल नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव प्रारंभ करना, उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी का आवेशन करना जैसी सभी गतिविधियों को संतोषजनक तरीके से पूर्ण किया जा चुका है। शार तथा अन्य केंद्रों पर बैठे प्रमोशन प्राधिकरण बोर्ड इसमें अपनी पूरी नजर रखती है। उनके प्राधिकार के पश्चात ही लॉन्च की गतिविधियां आगे जाती हैं। यह सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए सभी टीम अपना काम सुनियोजित तरीके से पूरा करती हैं और तंत्रों की स्थिति की जानकारी जैसे कि यान, उपग्रह, टेलीमेट्री, रडार, इन सब की जानकारी निदेशक को दे दी जाती है। तत्पश्चात सभी तंत्र निदेशक इसकी सूचना मिशन निदेशक को देते हैं। मिशन निदेशक इन सूचना के पश्चात पूर्णतः संतुष्ट होने पर प्रमोशन का प्राधिकार प्रदान करते हैं। अभी हम प्रमोशन से 23 मिनट 58 सेकंड की दूरी पर। As we wait for the launch, let me briefly tell you about the flight sequence which will be followed today. The reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before the launch. At liftoff, that is T0, the core stage or the first stage and 4 groundlet strap-ons will be ignited. The strap-ons will continue to burn for about 70 seconds and then they will be separated from the launch vehicle. Meanwhile, the airlit strap-ons begin to operate 25 seconds after the liftoff. The alleged rocket will fire to give the necessary inertia to the second stage for ignition while the first stage is burning with tail-off thrust. By the time the first stage completes its operation, the launch vehicle would have reached 69 kilometers altitude and would be flying forth at a velocity close to 1.8 kilometers per second relative to Earth. At 109 seconds flight elapsed time, the PS1 will separate and PS2 is ignited 200 milliseconds later. Crossing the dense atmosphere marks 2 flight events: the jettisoning of the heat shield and the initiation of closed-loop guidance. The total burn time of the second stage is 153 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. Then the third stage, called the HPS-3 stage, is ignited. Following 124 seconds burn time, the PS-3 is burnt out but continues to coast along. This stage separates another 106 seconds later. PS4 stage is ignited 10 seconds later from the separation of PS3. All stations During the burn regime of PSLV fourth stage, the orbital parameters for the injection of prime satellite EOS-04 are achieved. About 37 seconds after the stage shutdown, EOS-04 is separated. 55 seconds later, the first co-passenger satellite InspireSat is separated. Another 15 seconds later into the mission, the INS-2TD will be injected into its orbit. We are about 20 minutes from the launch. आइए इस प्रमोशन मिशन से जुड़ी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। यह पीएसएलवी प्रक्षेपण की कड़ी में 54वां मिशन है।
इस कड़ी में पिछला प्रमोशन 28 फरवरी 2021 को अमेजोनिया 1 नामक ब्राजीलियन उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ हमने देखा। AIT spacecraft event 449 completed. EOS-4 एक भूप्रेक्षण उपग्रह है। 450 completed. इसका Sigma to भार control events 451. 1713.4 kg का है। इस मुख्य उपग्रह के साथ दो अन्य लघु उपग्रह इंस्पायर सेट 1 तथा INS-2D नामक उपग्रह का प्रमोशन उनके उद्दिष्ट कक्षा में किया जा रहा है। 458 completed. मुख्य उपग्रह EOS-4 का पृथ्वी की निचली कक्षा में 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6907.159 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा में 97.5 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। PSLV C52 प्रमोशन यान PSLV XL संरचना वाला है। ऐसी संरचना में यह 23वीं उड़ान है। PSLV XL का मतलब इसमें कोर बूस्टर S139 के साथ 6-12 टन के स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न है। उसके ऊपर के चरण में 40 टन के तरल नोदक वाला चरण है, जिसे हम PS2 कहते हैं। फिर क्रमशः ऊपर चलते हुए ठोस नोदक वाला HPS3 चरण है। फिर अंतिम चरण के रूप में 2.5 टन के तरल नोदक वाला PS4 चरण आता है, जो कि अंतिम चरण है और जो कि उपग्रहों को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। अब हम प्रमोशन से 18 मिनट 9 सेकंड की दूरी पर All extract elements are ready to support PSLV C52 EOS-04 mission launch. -18 minutes. Sigma to control 460, 462, 468, 470 and 470. On your TV screens, the visuals from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Centre, and that is the PSLV C52 rocket standing majestically at the first launch pad. The mobile service structure has been Mission withdrawn. Director Roger. सभी तंत्रों की जांच पूरी की जा चुकी है। अब कुछ ही समय में सभी निदेशक इन तंत्रों की सूचना मिशन डायरेक्टर को देंगे। -17 minutes. Timing to control, timing confirms external hold mode. EOS-4 is configured for launch phase and cleared for PSLV C52 EOS-04 mission. Mission Director Roger. Timing Roger. TC Director confirms readiness of extract TTC network for supporting PSLV C52 EOS-04 INS-2D Inspire Sat-1 mission. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C52 EOS-04 launch. Mission Director Roger. Control to VLCC-1 and LCC-1. Please note, timing confirmed, external hold mode. PLCC Roger. TCTC, data loggers are on at SHAR and SHAR 2. -16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C52 EOS-04 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and extract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C52 EOS-04 mission at 5:59 hours IST today, that is 14th of February 2022. Control Roger. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. This is Vehicle Director. Based on the authorization from
Mission Director. Vehicle Director authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C52 EOS-04 mission at 5:59 hours IST today, 14th February. SDS servers activated. Mission computers confirm reception of SHAR 1 and SHAR 2 data. जैसा कि अभी आपने सुना, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, व्हीकल डायरेक्टर, स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर ने अपनी सूचना मिशन डायरेक्टर को दे दी है। तत्पश्चात मिशन डायरेक्टर ने यह लॉन्च को ऑथराइज कर दिया है। On your TV screens, Chairman ISRO, Shri S. Somnath, who has taken reins of the space agency recently, and Director Satish Dhawan Space Centre, Shri A. Rajarajan. Minus 14 minutes. You have just watched Shri S.R. Biju, Project Director PSLV and Mission Director for PSLV C52 EOS-04 mission, giving the clearance and authorizing the launch. Thereafter, Vehicle Director has announced the start of automatic launch sequence. It is about 14 minutes 30 seconds to the launch. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care of by the onboard computers. The countdown time for this particular mission has been 25.5 hours long, and it commenced on 4:29 hours yesterday, during which the launch vehicle and satellite systems have been checked, onboard batteries were charged, and liquid propellants, owing to their toxicity, were serviced with utmost regard to safety. Meanwhile, the tracking systems gear up for verifying their coherence, and meteorology instruments keep a constant vigil on whether the weather conforms to the launch commit criteria. जी हाँ, मिशन डायरेक्टर के प्राधिकार के बाद में व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अभियान पूरी तरह ओबीसी द्वारा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम पर जारी रखता है और उसका परीक्षण करता है। सभी कुछ संतोषजनक पूर्ण होने पर वह खुद ही Minus 12 minutes. इग्निशन कमांड देगा। इस तरह यान अब पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मौसम प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल, वायु गति भी सामान्य बनी हुई है। इस दौरान सभी रडार अपने डेटा मिशन कंप्यूटर्स को प्रेषित करते हुए और यान की सभी जानकारियां हमें वहीं से प्राप्त हो रही हैं। रॉकेट के सभी तंत्र स्वस्थ तथा तैयार हैं इस मिशन के लिए। अब हम मिशन से 11 मिनट 6 सेकंड की दूरी पर। आइए आपको प्रमोशन रॉकेट के समाकलन का फिल्म दिखा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं नोजल एंड सेगमेंट प्रथम चरण का, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसे प्रथम प्रमोशन मंच पर लाकर रख दिया गया है और अब इसे बहुत सावधानी पूर्वक अगले सेगमेंट्स लाकर, जैसे मिडिल सेगमेंट, हेड एंड सेगमेंट लाकर समाकलित किया जा रहा है। यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक किया जाता है। गुणवत्ता का इसमें खास ध्यान रखा जाता है। अब इसमें इग्नाइटर माउंट किया गया। अब आप देख पा रहे हैं यह स्ट्रैप ऑन बूस्टर
12 टन के नोदक के साथ। इसे भी प्रथम चरण के साथ संलग्न कर दिया गया। यह सब मोबाइल सर्विस टावर पर किया जाता है। अब SITVC टैंक और RCT टैंक को संलग्न किया जा रहा है। यह PS2 का विकास इंजन आप देख पा रहे हैं, जिनका पूर्ण परीक्षण IPRC महेंद्रगिरी में कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। जरूरी परीक्षण यहां पर किए जाते हैं तथा इसे MST ले जाकर PS1 स्टेज के ऊपर में संलग्न किया जाता है। The third and fourth stages are moved as an integrated module to the launch pad and integrated to the core motor. Minus 9 minutes. Here the PSLV third and fourth stage being assembled to the second stage of PSLV. This is a visual of the clean room where the critical satellite systems are being tested for their functionality before being moved to the launch pad. The EOS-04 being assembled to the payload adapter in a clean room with controlled environment. The two co-passenger satellites InspireSat-1 and InSat-2 TD. Thereafter, the heat shield or the payload fairing is closed. The rocket is ready in all respects for the launch. The mobile service structure moves behind by about 200 meters at the time of launch. 3,600 tons heavy structure which translates to a wheel load of 120 tons. 42 satellite launches so far from the first launch pad. Today's launch will be the 43rd. We are about 7.5 minutes from the launch time. Minus 7 minutes. Meanwhile, let me tell the viewers about the launch vehicle configuration. This is the PSLV XL version with alternate solid and liquid stages. 139 tons of solid propellant as the main booster called the PS1. It consists of 5 segments approximately 30 tons each with 12.2 tons solid strap-on motors alongside the main booster. Core dia of 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, and action time of about 107 seconds approximately. The strap-on is of 1 meter diameter and develops a thrust of 719 kilonewtons. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewtons thrust. Third stage of the rocket is called HPS-3. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters, and uses 7.65 tons of propellant. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रमोचन का घटनाक्रम है। इसमें सर्वप्रथम PS1 कोर बूस्टर को T0 पर इग्नाइट किया जाएगा, साथ ही ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन तथा एयर लेड स्ट्रैप ऑन को इग्नाइट किया जाएगा। ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन पृथक किए जाएंगे 70 सेकंड पर तथा एयर लेड स्ट्रैप ऑन प्रमोचन से 92 सेकंड पर पृथक कर दिए जाएंगे।
PS1 का पृथकीकरण 109.7 सेकंड पर होगा। इसके तुरंत बाद ही PS2 को प्रज्वलित किया जाएगा। तत्पश्चात ऊष्मा कवच का पृथकीकरण होगा 150 सेकंड पर और उसके बाद प्रमोचन यान क्लोज लूप गाइडेंस में चला जाएगा। इसके बाद PS2 सेपरेशन 262.5 सेकंड्स पर और उसके 1 सेकंड के बाद ही PS3 का प्रज्वलन होगा। PS3 का प्रज्वलन काल 124 सेकंड का है। इसके बंद होने के पश्चात भी कोस्टिंग फेज 106 सेकंड तक चलता रहेगा। तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं चेयरमैन ISRO श्री S. सोमनाथ। -4 minutes. PS4 का प्रज्वलन काल करीबन 515 सेकंड का है। इस दौरान हम EOS-4 को अंतक्षेपित करने की पूरी स्थितियां प्राप्त कर लेंगे तथा इसे EOS-4 को अंतक्षेपित किया जाएगा करीब 1056 सेकंड पर। इसके बाद सहयात्री उपग्रह इंस्पायरसैट 1 तथा INS-2D को क्रमशः अंतक्षेपित किया जाएगा। अब हम प्रमोचन से 3 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर। सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी। The overall height of PSLV is 44.4 meters and gross lift-off weight of PSLV XL version is 321 tons. यहाँ वैज्ञानिक सभी आंकड़ों को बड़ी गहराई से देखते हुए इस समय पूरा नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास। लेकिन यहाँ हमें सभी आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी। अब हम प्रमोचन से 2 मिनट की दूरी पर। -2 minutes. During the launch, the tracking of ongoing launch vehicle is carried out by the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, a host of ground stations in the flight path of the mission. Particular to this mission, 4 stations are tracking the flight. For the duration of 33 minutes, including the upper stage passivation, there is overlapping visibility of flight from these tracking stations. SDSC SHAR, Trivandrum, Mauritius, Antarctica are tracking this mission. We are about 1.5 minutes from the launch. दर्शकगण ध्यान देंगे, सबसे पहले T-2.8 सेकंड्स पर RCT का प्रज्वलन होगा। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर -1 minute. S139 का प्रज्वलन होगा। -55 seconds. अब हम प्रज्वलन से 50 सेकंड की दूरी पर। -50 seconds. I urge the viewers to look intently at the TV screens for the -45 seconds. reaction control thrusters firing, which is scheduled to take place 3 seconds before -40 T0. seconds. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C52 आसमान की ऊंचाइयों पर जाता हुआ PSLV C52 Stage performance normal. क्षण है गर्जना करता हुआ रॉकेट अपने उद्दिष्ट Airlift strap on ignited. That's a marvelous liftoff, and the PSLV first stage performance is according to the expectations for this mission. 4 strap-ons were ground-lit and 2 more strap-ons are air-lit. Cumulative thrust when all motors fire is close to 9,100 kilonewtons. SHAR on main auto. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी घोषणा की प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। SHAR to main auto. इसका प्रज्वलन काल 109 सेकंड का होगा। Strap on separated. ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन पृथक कर दिए गए हैं। We are about 1.5 minutes after the launch. The altitude is 48 kilometers. Separated. The strap-ons have separated, and the core stage will burn till 1 minute 50 seconds. इस क्रम में अगला PS1 स्टेज को पृथक किया जाएगा तथा PS2 स्टेज का प्रज्वलन। Stage separated. Second stage engine started. The ignition of the second stage has been confirmed. Second stage performance normal. द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा सामान्य निष्पादन कर रहा है। The second stage increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.9 kilometers per second to 4 kilometers per second. On your TV screens, the flight parameters of mission. ऊष्मा कवच पृथक हो गया है। ऊष्मा कवच के पृथक होने के पश्चात अब यान क्लोज लूप गाइडेंस में है। इसका अर्थ है अब वो अपने सेंसर्स की मदद से अपनी स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल स्थिति की जानकारी ले अपने पथ का अनुसरण करेगा। 3 minutes into the flight, and SHAR station is continuing to track, and Trivandrum station has started to acquire the signal of launch vehicle flight. PS2 का प्रज्वलन काल 152 सेकंड का है। Second stage performance normal. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41-ton propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer, powered by the GG pump-fed Vikas engine that develops 799 kilonewtons thrust. You are able to see the ground trace. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का सामान्य प्रदर्शन। Second stage separate. Third stage ignited. अभी आपने देखा द्वितीय चरण पृथक हो, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. और यह पूरी तरह सामान्य है। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 124 सेकंड का होगा। उसके बाद कोस्टिंग फेज शुरू होगा जो कि 106 सेकंड का होगा।
तृतीय चरण पूरी तरह सामान्य. The third stage has begun its action. This will continue to burn for about 124 seconds, that is a little over 2 minutes. In this duration, it will add 211 kilometers to the altitude and increase the relative velocity from 4 to 6 kilometers per second for the mission requirements. Altitude currently 300 kilometers. PS3 तृतीय चरण है PSLV का. यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है. इसमें कुल 7.6 टन का HTPB पर आधारित ठोस नोदक होता है. इस चरण का व्यास 2 मीटर का होता है तथा लंबाई 3.6 मीटर की होती है. इसमें 24 टन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करने की क्षमता होती है. इसका कार्यकाल 124 सेकंड का होगा और उसके बाद कोस्टिंग फेज शुरू हो जाएगा. कोस्टिंग फेज में प्राप्त संवेग के साथ स्वतः ही यान करीब 100 किलोमीटर आगे बढ़ेगा. Third stage action completed. तृतीय चरण का जलन काल समाप्त होता हुआ और अब यह बंद हो गया है. कोस्टिंग फेज शुरू. Vehicle in coasting phase. Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 1 minute 47 seconds, during which time there is 91 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. The coast phase exists while the rocket is 950 to 1500 kilometers downrange from the launch port. SHAR and Trivandrum stations still tracking. Vehicle performance normal. There is no thrust, however, the launch vehicle continues to be controlled. For the coast phase control, the stage is equipped with 2 clusters of 50 Newton thrusters mounted on the outer diameter of the propulsion bay ring. They derive the propellants from the main propellant tank itself. A pair of these thrusters are also used for the roll control of PS3 and PS4 combined during the PS3 stage operation. Plus 8 minutes. अब हम प्रमोचन से 480 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं. सापेक्ष गति 5.8 किलोमीटर प्रति सेकंड. ऊंचाई 451 किलोमीटर. कोस्टिंग फेज जारी है. Third stage separated. तृतीय चरण पृथक कर दिया गया है. इसके 9 सेकंड बाद चतुर्थ चरण का प्रज्वलन. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य. चतुर्थ चरण 515 सेकंड का प्रज्वलन काल है. परफॉर्मेंस नॉर्मल. चतुर्थ चरण भी सामान्य निष्पादन करता हुआ. यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उसकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने की स्थिति में लाएगा. The fourth stage is presently operating and developing intended thrust. Fourth stage performance normal. The burn time for the fourth stage for the present mission is 8 minutes 35 seconds. It operates till the orbital parameters for injection of satellite are achieved. This stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer.
Trivandrum and Mauritius stations tracking presently. Plus 10 minutes. This stage is pressure fed. That means the pressurized gases create the necessary high pressure for the propellant to enter the combustion chamber. Having fewer parts, this is simpler and lighter than its pump-fed counterpart for similar thrust. The boost phase control. Performance normal. The boost phase control of the fourth stage is achieved by two-plane gimballing of both the engines. By differential deflection of the engines, the roll control is also achieved. यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष में हम देख पा रहे हैं चतुर्थ चरण अपने अनुमानित पथ को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ। Plus 11 minutes. PSLV चतुर्थ चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन ईंधन के रूप में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 2.5 टन का ईंधन होता है तथा दाब भरित इंजन के द्वारा यह 7.33 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करता है। इसमें ऐसे दो इंजन्स लगे होते हैं जिसका मतलब यह 14.6 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न कर सकता है। इस समय सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए इस काल के अंत तक उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी तथा PS4 को बंद कर दिया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं यान पूरी तरह अनुमानित पथ को अनुसरण करता हुआ। 4 stage performance normal. चतुर्थ चरण का प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य। सापेक्ष गति 6.53 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 541 किलोमीटर। Plus 13 minutes. आइए इस दौरान EOS-4 भूप्रेक्षण उपग्रह के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। यह भूप्रेक्षण उपग्रह अपनी श्रेणी का दूसरा उपग्रह है जो कि कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन समर्थन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। वर्ष 1988 IRS-1A के साथ इसरो ने सुदूर संवेदन उपग्रहों की शुरुआत की थी। आज भारत के पास सुदूर संवेदन उपग्रहों का बड़ा समूह है जिसमें रिसोर्स सेट, RI सेट, ओशन सेट, इनसेट, स्केट सेट इत्यादि शामिल हैं। इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण वानिकी, समुद्री संसाधन तथा आपदा प्रबंधन में उपयोग किया जाता है और अब यह 35वीं उड़ान होगी इस श्रेणी के उपग्रह की। इस श्रृंखला में EOS-1 का सफल प्रक्षेपण हमने 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 प्रमोचन यान से देखा। अब हम साक्षी बनेंगे EOS-4 मिशन के। EOS-4 एक रडार प्रतिबिंबन उपग्रह है जिसमें सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिबिंब प्रदान करने की क्षमता है। यह सी बैंड में डेटा इकट्ठा कर रिसोर्स सेट, कार्टोसेट जैसे उपग्रहों को पूरक डेटा के रूप में काम करेगा। इसमें सहयात्रियों के रूप में लघु उपग्रह हैं INS-2D तथा InspireSat-1। INS-2D एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है जो कि भारतीय भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्वगामी उपग्रह है। इस उपग्रह में नितभार के रूप में भूतापीय कैमरा लगा हुआ है जिससे भूमि, पानी तथा जलाशयों के सतह के तापमान का सटीक आकलन लगाया जा सकेगा। इसमें वनस्पतियों जैसे फसल,
और वनों के निरूपण के कार्य भी किया जा सकेगा। Plus 15 minutes. दूसरा सहयात्री उपग्रह इंस्पायर सैट 1 परफॉर्मेंस नॉर्मल एक छात्र उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तथा लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स कोलोराडो विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। चतुर्थ चरण का प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य। The prime satellite taking light in this mission is the EOS-04, which is a radar imaging satellite designed to provide high-quality images under all weather conditions for applications such as agriculture, forestry and plantation, flood mapping, soil moisture and hydrology. Collecting Earth observation data in C-band, it complements or supplements the data from a group of remote sensing satellites like ResourceSat, Cartosat Plus series 16 minutes. and RISAT-2B series. The hallmark of Indian space program is the application-oriented focus and the benefits that have accrued to the country through these programs. stage performance normal The co-passenger satellites are INS-2TD, which is a technology demonstrator satellite from ISRO. It is a precursor to the India-Bhutan joint satellite INS-2B. Having a thermal imaging camera as its payload, the satellite benefits the assessment of land surface temperature, water surface temperature of the wetlands and lakes, delineation of vegetation, and thermal inertia. India and Bhutan have been engaged in space cooperation ever since the launch of South Asia satellite in May 2017. The South Asia satellite was launched by India as a gift to the countries in South Asia. 17 minutes. Now satellite injection conditions are achieved. we are awaiting the satellite placement into the intended orbit. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन समाप्त। अंतःक्षेपण की परिस्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। किसी भी क्षण EOS-4 को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। EOS-04 satellite separated. और यह हर्ष का पल आ गया है। EOS-4 को उसके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Major milestone of the mission has been achieved. The EOS-04 satellite has been injected into its orbit. To follow next are the co-passengers InspireSat-1 and InSat-2TD. अभी आपने ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देखा EOS-4 सैटेलाइट अपने कक्षा में स्थापित किया गया। इस घटनाक्रम में अगला InspireSat-1 तत्पश्चात INS-2D का अंतःक्षेपण किया जाएगा। InspireSat-1 is a student satellite developed by Indian Institute of Space Science. This is the confirmation of InspireSat-1 separation. INS-2D separated. All the three satellites are separated. Mission completed. Handing over to mission director. PSLV C52 has injected EOS-04 primary satellite and two other passenger spacecrafts into the desired orbit. PSLV C52 EOS-04 mission is fully accomplished. जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, PSLV C52 EOS-4 मिशन सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। The mission PSLV C52 EOS-04 has been successfully accomplished. And we here take leave from you as we take you to the address by Chairman ISRO. As we take leave from you, do take good care of yourselves. नमस्कार, शुभ दिन। Testing 1 2 3 4 5.
The mission of PSLV C52 EOS-04 has been successfully accomplished. The primary satellite EOS-04 has been put in a very precise orbit by the PSLV C52, and along with that, the co-passenger satellites INS-2D and InspireSat also has been placed in the right orbit. So congratulations to everybody who worked for this mission. So let me request the mission director, Sri Biju, as well as the Space Radar director to speak to you. The three satellites, EOS-04, InspireSat, as well as INS-2TD, have been injected as precisely as possible into their desired orbits. This has been made possible only because of the very dedicated and very sincere effort put in by each and every member of Team ISRO who contributed to this mission in for the launch vehicle as well as satellite and for the range throughout the campaign. I salute one and all for this wonderful mission, our technical teams, our administrative teams, our review forums, and of course our seniors and gurus and mentors who have given valuable guidance and directives throughout the entire phase of the campaign. I thank our satellite teams, EOS-04 in INS-2TD as well as InspireSat, for giving us this responsibility of taking them to the orbit. We have done that. I express my sincere gratitude to all the team members as well as their family members for accomplishing this mission flawlessly. My best wishes to all the satellite teams for excellent and wonderful years ahead in orbit. Thank you all. Now Srikanth, the satellite director. Respected Chairman ISRO, Center Directors, all senior ISRO management members, mentors, and Team ISRO and my own project team. Let me congratulate first and compliment PSLV team on precise launch and the injection of EOS-04. The launch has rejuvenated the ISRO team once again. The most awaited EOS-04 spacecraft is an Earth Observation mission, all-weather, day and night imaging SHAR mission with indigenously developed state-of-the-art technology SHAR, and will serve the country in the sectors of agriculture, moisture, soil moisture, disaster management, disaster assessment, carbon inventory, forest and plantation management, and many more sectors. Sir, the health of the EOS-4 is perfectly fine after separation. I am happy to share that the solar panels are deployed autonomously and after injection and started generating the designed power. 2 solar panels are also initiated at the deployment, but however we will get the confirmation in another 2 minutes in Antarctic station. With that, now the large SAR panel is ready to be used. We will complete the deployment of data transfer dual gimbal antenna in an hour. In a couple of days after calibration and baking for outgassing, the satellite will be ready to deliver the glimpse of images. The services will be the integral part of many governmental services. Chairman sir, EOS-04 is taken a small step in the nation's dream of opening the space sector with the industry participation in the form of build to print and also assemble and test. We have fairly succeeded in our effort. I am thankful to Chairman ISRO and my URSC Director. I am thankful to ISRO Chairman and my URSC Director for giving me an opportunity to lead the dedicated and hard-working team packed with knowledge.
and also with the esteemed review panel. I express sincere gratitude to all the committee and also my director who guided the team in achieving the goal. I thank all center directors and his headquarters directors for the support and guidance. Sir, me and my team are confident that EOS-04 spacecraft will be an asset to the nation. Once again, I thank and congratulate the entire ISRO team and my own project team for achieving today's accomplishment. Thank you. Thank you, Biju and Srikanta, for that wonderful work that you have done. So let me thank each one of you for being with us during these times, for supporting us and to make this mission possible all across ISRO and all across the nation. And this, as you know, this spacecraft is going to be one of the biggest assets for us to serve the country. So thank you once again. We will be back again with the next launch of PSLV very soon. Till then, goodbye.